हेलो हाय मोस्ट वेलकम इन स्टैनफोर्ड इज इवन स्टैनफोर्ड इज बोले तो इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड स्टैनफोर्ड मतलब एकदम फन में सीखेंगे, एकदम आसान तरीके से सीखेंगे इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश तो बच्चों का खेल है, क्योंकि हर कोई बोलेगा इंग्लिश है बिकॉज वी आर Stamford. So here I am back again with a fantastic lesson, that is my book report, and in this lesson you are going to learn the basic main elements or parts of a story or a novel. Okay, the second thing you are going to learn about protagonist and antagonist. Third thing you are going to learn about story of Mojo, keyboarding skill, either or neither nor. We will revise it. Self-assessment, we'll think its importance and benefits. Next, a small group based learning, or if I say group study. Next thing, we'll learn these things with the help of group discussions, audio video round, a rapid fire round, book exercises and presentations. That is going to make this class and this lesson a fun loving lesson. Yeah, we will do fun, a lots of fun with lots of learning, because we say learn with fun, because we are a stand for this classes. So dear students, we have a fantastic question of the day today in this lesson, and which I am going to share in the live class, which you will answer in a fantastic way. Next thing, let's recap. After question of the day, we will recap the last day learning or understanding of FTS2, which I told you of level 2 minimum requirements, which we discussed yesterday. What did you understand with that? What is your understanding of level 2 requirement or level 2 eligibility criteria for passing with a passing grade? What is your understanding, and what did you learn in the last lesson? Please share your understanding, your learnings, and don't forget to answer question of the day first, which I am sharing every day live. You can ask me the question of the day early morning if you want to prepare a good answer, or if you want to conduct the question of the day. Please ask me in the morning before class or a day before the lesson. Sure. So now it's time to learn the main part of this lesson, that is parts of a novel or story. एक स्टोरी या नॉवेल या फिर मूवी में भी जो मेन एलिमेंट्स, मेन पार्ट्स होते हैं, व्हाट आर दीज मेन एलिमेंट्स और पार्ट्स? लेट्स अंडरस्टैंड इट इन डिटेल, because if you know the parts of a story, novel or any movie, only then you can read or write a best novel, you can understand it better, you can imagine in a proper manner. If you don't know these parts, you are not going to understand a story in a proper manner. So let's understand it, because now you have read one novel, one storybook. Now you can understand it better. Your understanding can enhance on the next level of learning, because now you know what is novel and what can we get in a storybook. So let's understand the very important part, the main part,
that is title or name of a story, name of a novel or name of a movie. Title shows what are we going to read about or what do you want to write about. Title should share this thing properly. नेक्स्ट थिंग, टाइटल जो होता है मेन आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है, एक हल्की सी झलक देता है आपके रीडर को, देखने वाले को, पढ़ने वाले को कि क्या हो सकता है बुक के अंदर. इज दिस क्लियर? द नेक्स्ट थिंग इज ऑथर. ऑथर इज अ पर्सन हु राइट्स अ स्टोरी. जो भी स्टोरी को लिखते हैं या बुक को लिखते हैं, उस बुक को लिखने वाले को ऑथर कहते हैं. नेक्स्ट इज इलस्ट्रेटर. इलस्ट्रेटर, प्लीज़ प्रोनाउंस इट विद मी, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाएगी. इलस्ट्रेटर वो इंसान होता है जो किसी बुक को, कई बार कुछ बुक्स जो होती हैं किसी अदर लैंग्वेज में होती है, जैसे कि हैरी पॉटर. हैरी पॉटर जो बुक है जिस पे मूवी भी बनी है, तो ये जो हैरी पॉटर की बुक थी ये इंग्लिश में लिखी गई थी बेसिकली, बट इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन किया गया, डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया. तो सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं होता है, ट्रांसलेशन के साथ साथ कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ पिक्चर्स की आवश्यकता नीड भी होती है. तो यहाँ पे काम आते हैं हमारे इलस्ट्रेटर भाई साहब. तो इलस्ट्रेटर भाई साहब का काम क्या होता है? बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि किसी स्टोरी को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, किसी स्टोरी में अगर पिक्चर्स की ज़रूरत है तो वो देना. थर्ड थिंग, अगर किसी राइटर ने, किसी ऑथर ने किसी बुक को लिखा है और उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके नई कॉपी छपवाने की ज़रूरत है, तो इसको एक इलस्ट्रेटर और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करता है. तो ये 3 जॉब है इलस्ट्रेटर का. नेक्स्ट थिंग इज सेटिंग. तो सेटिंग क्या होता है? सेटिंग से पहले आप बताइए क्या होता है इलस्ट्रेटर. मैम क्या होता है इलस्ट्रेटर? चित्र बनाने. इस तरीके से नहीं समझना है, आपको उस तरीके से समझना है जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे मैंने आपको समझाया अभी. ठीक है, ध्यान कहाँ होना चाहिए? मेरी बातों पे एकदम अच्छे से सुनना है. तो चलिए अब सेटिंग की बात करते हैं. सेटिंग वो नहीं है जो सेटिंग आप करते हो, ठीक है, सेटिंग पे बात है हम. तो सेटिंग जो स्टोरी के अंदर होती है, सॉरी थोड़ा सा मजाक हो गया, सेटिंग मतलब ये होता है कि आपके आसपास का इन्वायरमेंट एज पर द सिनेरियो होना चाहिए, एज पर द स्टोरी होनी चाहिए. अब जैसे कि आप एक मूवी देखते हो, मूवी में क्या देखते हो? बर्थडे पार्टी होने जा रहा है, तो क्या करते हैं वो पूरा का पूरा सेट जो होता है आसपास का इन्वायरमेंट बर्थडे वाला बना देते हैं. कुछ केक्स होते हैं, बलून्स होते हैं और लोग कोन वाली टोपी पहन कर आ जाते हैं. तो ये एक इन्वायरमेंट जो बनाते हैं, आसपास का परिवेश जो इन्वायरमेंट बनाया जाता है, इसको सेटिंग कहते हैं. तो मूवीज़ में तो दिखाना बड़ा आसान होता है, बदल दिया, बना दिया, सेट तैयार कर देते हैं. बट व्हाट अबाउट स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स? तो आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी स्टोरी को स्टार्ट कैसे किया जाता है? I was going in a dark night road and that road was so vacant. I was scared to see long tall trees rose. There were a number of trees which were tall. Somewhere some dogs were barking and some horror sounds were coming out. Ooh. I was scared. Suddenly a car came and went just back of me and I was scared. Oh my God, what is this? And suddenly a woman appeared in front of me with a dark face. Then suddenly moon came at the top of the sky. And I said, I am not going to be alive. So did you understand? जो मैं कर रहा था इसको कहते हैं स्टोरी को नैरेट करना. दूसरी चीज़ जो मैंने बताया कि लंबे लंबे पेड़ हैं, घना अंधेरा है, गाड़ी आके गुजर रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, ये इस तरीके से स्टोरी में डिफ़ाइन किया जाता है. ये एक्चुअली में आपको सेटिंग बताई जाती है, आसपास का इन्वायरमेंट बताया जाता है. और किसी भी अच्छी स्टोरी को पढ़ने के लिए
लिखने वाले इस तरीके से सेटिंग को डिफाइन ज़रूर करते हैं ताकि जो भी इनको पढ़ रहे हैं वो इन्वायरमेंट को अच्छे से समझ सकें। लाइक एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। When they entered in a house where murder was scheduled by a murderer, suddenly they turned and saw everything was totally ruined by a person or somebody. A lady was lying on the floor with knife in her belly. Lots of blood everywhere, but he found some footprints coming out of the door but going out of the window. These footprints, तो देखा आपने मैंने सेटिंग्स कैसे डिफाइन किया। सब कुछ बिखरा हुआ है, लेडी लेटी हुई हैं, चाकू लगा हुआ है, फुटप्रिंट्स पैरों के निशान हैं। सो इस तरीके से हम सेटिंग्स को डिफाइन करते हैं स्टोरी राइटिंग में या रीडिंग करते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि सेटिंग क्या है। अगर आप सेटिंग पर ध्यान दोगे, सही से पढ़ोगे तो आप स्टोरी को इमेजिन कर पाओगे। इमेजिन करेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम। हर स्टोरी में किसी न किसी मुद्दे को उठाया जाता है, कुछ ना कुछ उसका मोरल ऑफ द स्टोरी होता है, कुछ ना कुछ मेन आइडिया होता है। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या ज़रूर होती है हर स्टोरी में, जिसके ऊपर कोई भी स्टोरी लिखी जाती है। सो प्लीज़ फाइंड आउट व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज सोल्यूशन। अगर प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसमें आपको सोल्यूशन भी दिखाया जाएगा, ठीक है। और सोल्यूशन नहीं दिखाया गया तो टू बी कंटिन्यूड करके 3 डॉट्स मारते हैं कि हाँ आगे कुछ होने वाला है। जैसे बाहुबली के बाद टू बी कंटिन्यूड करके 3 डॉट्स लगा दिया जाता है ताकि बाहुबली 2 आने वाला है। नेक्स्ट थिंग, एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्टोरी का एंड होता है हैप्पी एंडिंग, सैड एंडिंग, नो एंडिंग। जैसे कि कसौटी ज़िंदगी की चलती थी पहले, जिसका कोई एंड ही नहीं होता था। हम तो बच्चे से बड़े हो गए और अभी तक कसौटी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। तो ऐसी भी कुछ स्टोरीज़ होती हैं जिसमें कोई एंड नहीं होता है, जब मन किया जहाँ से शुरू कर देते हैं। लेकिन नॉर्मली स्टोरीज़ की एंड होती है, या तो हैप्पी एंडिंग होगी या तो सैड एंडिंग होगी। दूसरी चीज़, अगर उनको नेक्स्ट पार्ट बनाना है तो टू बी कंटिन्यूड करके भी छोड़ते हैं। इन सब में एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कवर पेज। कवर पेज ऑफ अ बुक। Cover page is the most important part of a novel or story book because जो दिखता है वही बिकता है मेरे भाई। So cover page should be so interesting and descriptive and इसमें बहुत ज़्यादा लिखा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत पिक्चर होना चाहिए और एक आध थोड़े से वर्ड्स होने चाहिए। और वो वर्ड्स इतने अच्छे इंप्रेसिव होने चाहिए कि जो भी पढ़े उसका मन करे कि उस बुक को पढ़े। नेक्स्ट थिंग, इसमें हर स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। दे आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। हर स्टोरी में मेनली 3 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, प्रोटैगनिस्ट वो होता है जो इसको हम लोग आम भाषा में हीरो कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरो। बट टेक्निकली उनको कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। अगर आप कोई भी नॉवेल पढ़ रहे हो, स्टोरी बुक पढ़ रहे हो, उसमें जो मेन रोल, लीडिंग रोल में होता है, पॉजिटिव वाला, अच्छा वाला रोल में होता है, पॉजिटिव रोल में, कैरेक्टर में, उसको कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। दूसरा जो नेगेटिव रोल में होता है, मेन रोल में नेगेटिव वाला, मतलब कि विलेन का रोल करता है, उसको कहते हैं एंटागनिस्ट, आम भाषा में कहते हैं विलेन। नेक्स्ट इज सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी होते हैं जिनके बिना तो कहानी अधूरी रहती है कि नहीं। सो दीज आर द मेन एलिमेंट और पार्ट्स ऑफ ए स्टोरी or novel which we should know for better and proper understanding of a novel। क्योंकि अगर आप अच्छे पढ़ सकते हो then only you can write better and story लिखा करें आप, because by writing a story you can improve your language a lot। It's my suggestion for you, please write a story। भले छोटी स्टोरी हो लेकिन लिखे ज़रूर, एक स्टोरी ज़रूर लिखे। हर इंसान क्रिएटिव है, आई बिलीव। हर किसी को ऑलमाइटी ने बहुत पावर दिया है। सो आपके अंदर भी वो क्वालिटी होगी, एक स्टोरी लिखें। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। इट विल हेल्प यू enhance your language at
fantastic level. So dear students, here we have many lessons in between which will help us to improve a lot. Among these lessons, we have one fantastic lesson, that is self-assessment. So one simple question for you, that is, why self-assessment is important? Why self-assessment is important? Remember that grass cutter story in basic level? So how self-assessment can help you to improve and how self-assessment is beneficial for your improvement. Please come up with a fantastic answer, and if you have something to share right now, write then in the comment section of this video. I'm waiting for your answer. I'll reply you within 2 hours, so please reply right now and get my fantastic feedback on that, because comment section of any lessons video is not a comment section, that is your writing part, so keep writing there. Next thing, how can general expectations of level 2 help you to improve? See, recently in the last lesson you get to know that what are the expectations and minimum requirement to pass, or what you should learn minimum in this intermediate level. So how these small expectations can help you to improve? Let me know. I'm waiting for your answer. Next thing is a fantastic video in this lesson. When I'll send you this lesson, along with the link of this lesson, I'll share a link of short video, and this time I'm going to share a fantastic video of Mojo. Lesson Dozo something is there. So I'll share the story of Mojo. So when you'll watch the lesson, जब आप उस छोटी वाली वीडियो को देखेंगे, मोजो की कहानी देखेंगे, कैसे मोजो कितना कॉन्फिडेंट था और एक प्रेस रिपोर्टर के आने के बाद उनके नेगेटिव क्वेश्चंस के बाद कैसे वो फ्रस्ट्रेट हो गया, कैसे उस पर मतलब कि जो एक पॉजिटिवनेस थी वो ख़त्म हो गई, उसका जो एक भरोसा था अपने टीम पे वो ख़त्म हो गया। तो आपको उस वीडियो को देखना है, शॉर्ट वीडियो को, और उससे क्या सीखा, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द शॉर्ट वीडियो, ये तो आपको लेकर आना ही आंसर में। बट अलॉन्ग विद दिस क्वेश्चन आई हैव 4 more questions फॉर यू। फॉर नंबर 1 क्वेश्चन, हाउ डिड मोजो सेलेक्ट हिज टीम फॉर म्यूजिकल प्रोडक्शन? जो एक म्यूजिकल कॉन्टेस्ट होने वाला है, उसके लिए मोजो ने अपनी टीम कैसे सेलेक्ट किया? आई थिंक ही सेलेक्टेड हिज फ्रेंड्स। व्हाट डू यू थिंक? प्लीज आंसर। How did Mojo respond when Brucey and Katy said that they were not ready? प्रेस रिपोर्टर के आने से पहले जब ब्रूसी और कैटी कहते हैं कि मुझे तो अपने डायलॉग्स ही याद नहीं हो रहे, तो कितना पॉजिटिवली आंसर किया था, तो क्या बोला था, कैसे रिस्पॉन्ड दिया था मोजो ने? प्लीज कम अप विद आंसर। Why did Mojo's behavior change later on? बट जो प्रेस रिपोर्टर आती है उसके क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद जो बिहेवियर में चेंज आता है, वो कहते हैं लोगों के कहने से अक्सर लोग अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। सो वो जो चेंज आया बिहेवियर में, वो चेंज कैसा था? हाउ वॉज दैट? सो वाई डिड मोजोज बिहेवियर चेंज लेटर ऑन? मोजो का बिहेवियर क्यों चेंज हुआ? प्लीज आंसर दिस वन ऑल्सो। हैव यू बीन इन अ सिचुएशन लाइक दिस? क्या आप भी कभी ऐसे सिचुएशन में हुए हैं? वी आर ह्यूमन बीइंग पीपल, सो what people speak it affects। मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों के कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है जब लोग अच्छा या बुरा कहते हैं। हमें अच्छा बोलते हैं तो हमें एक पुश मिलता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, लेकिन जब लोग गलत नेगेटिव बातें करते हैं तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज होता है, हम इरिटेट भी होते हैं, चिड़चिड़ापन भी आता है, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, नो डाउट। बट आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि लोग कुछ भी कहें उसको यहाँ निकाल के रख दो साइड में, और फोकस ऑन योर ड्रीम, फोकस ऑन योर गोल, और आज का टास्क चुपचाप अपना 100% देते हुए कंप्लीट करें। डोंट केयर व्हाट पीपल से, केयर अबाउट व्हाट आर यू डूइंग टुडे। आर यू डूइंग समथिंग टुडे गुड? आर यू डूइंग समथिंग फॉर योर पर्पस और गोल? डू यू हैव अ गोल बिफोर दैट? Think. So dear students, let's have a look on the next segment that is really fantastic,
एंड वी आर गोइंग टू डू कीबोर्डिंग इफ़ इट इज़ अवेलेबल, अगर अवेलेबल हो तो कीबोर्डिंग कर लें 10 मिनट के लिए, अदरवाइज ये टाइम हम लोग ग्रुप स्टडी को देंगे, ठीक है, ग्रुप डिस्कशंस के लिए भी देंगे। नेक्स्ट थिंग वी विल रिवाइज टुडे आइदर और नाइदर नॉर। तो देखिए क्या है, छोटा सा एग्जाम्पल से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग अपने अपने एग्जाम्पल लिखो अभी कभी कमेंट सेक्शन में, ठीक है, लाइव क्लास में दूसरा एग्जाम्पल देना, कमेंट सेक्शन में अभी कभी एक एग्जाम्पल लिखिए। आई लाइक टू ईट आइदर एप्पल और ऑरेंज। मैं पसंद करता हूँ खाना या तो सेब नहीं तो ऑरेंज, मतलब दो में से कोई एक चीज़ तो खाऊंगा ही खाऊंगा, चाहे सेब खाऊं या ऑरेंज खाऊं। मतलब आइदर और का यूज होता है दो में से किसी एक चीज़, एक ऑप्शन के चुनाव के लिए। नेक्स्ट, आई नाइदर लाइक टू ईट एप्पल नॉर ऑरेंज। मुझे ना ही एप्पल पसंद है खाना, ना ही ऑरेंज खाना है। तो नाइदर नॉर का यूज़ होता है दोनों ही ऑप्शन को रिजेक्ट करने के लिए, कि मुझे ना ही एप्पल पसंद है ना ही ऑरेंज, मुझे दोनों ही नहीं खाना है। जब दोनों ऑप्शन को रिजेक्ट करना है तो नाइदर नॉर, अगर दो में से एक का चुनाव करना है देन आइदर और। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। व्हाट वुड यू लाइक टू इम्प्रूव? आज आप क्या इम्प्रूव करना चाहेंगे इन इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज में कौन से टॉपिक पे आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो आज? तो चलिए उस पर हम लोग ग्रुप स्टडी स्टार्ट करते हैं स्मॉल ग्रुप में फॉर 15 मिनट्स। अगर कीबोर्डिंग की व्यवस्था नहीं है, अगर वहाँ पे सहूलियत नहीं है कि आप कीबोर्डिंग कर सके, तो टोटल 25 मिनट्स के लिए, 15 मिनट ये कीबोर्डिंग वाला 10 मिनट्स, टोटल 25 मिनट्स के लिए हम लोग ग्रुप स्टडी करेंगे और एक चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसी ग्रुप के अंदर में जब हम लोग ग्रुप स्टडी कर रहे होंगे वी विल डिस्कस कमिटमेंट कार्ड। कमिटमेंट कार्ड को भी डिस्कस करेंगे अभी तक, क्योंकि अब बुक लगभग लास्ट है। आई होप आपने कमिटमेंट कार्ड पूरा फिल कर लिया होगा आज तक में। सो लेट्स डिस्कस व्हाट यू फिल्ड इन योर कमिटमेंट कार्ड टिल today. If you love this lesson, learning this lesson and you learned something today, आज कुछ आपने सीखा है इस लेसन में, please like this video. It's my humble request. And if you want to share it with a friend or relative जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट कर दिया लेकिन कुछ सीखा नहीं उन्होंने, तो अभी कभी शेयर कीजिए। एंड आई वुड लव कि आप शेयर करेंगे और हमें हेल्प करेंगे नीडी एंड सीरियस स्टूडेंट्स तक पहुंचने में। इसके लिए हम आपको एक छोटा सा गिफ्ट देंगे थ्रू कैशबैक। वो पैसे का देना मेरा हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है आपको गिफ्ट करना, आपको थैंक यू करना। दैट कैशबैक इज अ थैंक यू फ्रॉम Stamford for your kind help. Next thing, please subscribe this channel if you want to learn the next fantastic lesson. So thank you so much. See you in the next lesson. In this lesson 89, my book report, actually you are going to prepare report on your novel or storybook, what you are reading in this intermediate level, okay? And I hope you must have ended the book right now. So let's understand what are you going to fill here. You are going to fill here first of all title, name of the novel or storybook which you were reading. Next thing, author name means writer's name. Next, illustrator's name, I have already explained, so illustrator name you are going to read. Now you are going to tell about the characters, at least 5, minimum 5 characters. If you have a protagonist, so you are going to write his name first. Next, antagonist, any villain, then write his name here, and then 3 supporting characters name you should write here, okay? Maybe in your story there are only 3 or 4 characters, it's totally okay, you can write 3 or 4, but if you have more than 5 then write minimum 5 characters in this report. So see how should we create or write a report on a story or novel. So next thing, you are going to explain setting of the story. So please start your sentence like this. This story mostly takes place in suppose that if you are reading Hardy Boys, so in Hardy Boys mostly the story is around the tree houses. So the story mostly takes place in area where tree houses are there. So you can start like this and write at least some more details about the setting of the story. Next thing which you are going to write, conflict or problem.
whatever was the problem or conflict in the story, you are going to explain in your own words here. Then if there is a problem, there should be a solution. So you write the solution of the problem or conflict. Conflict and problems are synonyms somewhere, so write solution here, problem here, solution here. I hope you understood this thing. Next thing, if you are reading the novel or storybook with any person, then you should write the name of your reading buddies, means with whom were you reading this novel or storybook. Write those people's name. So next, if I had to design the cover of the book, this is what I would like look like. So it look like, so if you would get a chance to design front page or cover page, front page or cover page of the novel or storybook, how would you like to design it? Please design some pictures, some statements, some quotations, up to you. How are you going to design? So design it please in a fantastic way. Please take A4 sheet and then design it there. Okay, next I'd rate this book 1 2 3 4 5 as per your interest, like or dislike. Rate this book, whatever book were you reading, rate it 3 star, 4 star, 5 star, and write reason too. Why are you giving 3 star, 4 star or 5 star? There should be you must write a reason. Now it's time to share the experience. It's time to share the experience of novel or book reading. During the book, how are you going to start the sentence? Listen, how are you going to, your start of the sentence should be like this, this and this. Like during the book reading sessions, I liked. What did you like? Write here in a sentence. I am proud of. Do you proud on something in a story or during the story reading program? So write a sentence here. The difficult part was, what was the difficult part in the story which you struggled, which you faced during novel reading or book reading? Please mention that problem, that difficulty. Next time I will improve. In upper intermediate level, if you are part of our curriculum or course and you are going to read a next book in upper intermediate level or advanced level or in expert level, so what would you like to improve? So please mention that part here. So next lesson is perspective. That is really fantastic lesson. So see you in the next lesson and a fantastic concept related to perspective with audio video and a fantastic concept. See you, bye bye.